ओके सो कल हम लोगों ने डायमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वी सॉ एवरीथिंग। आज हम लोग पैरामैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे। हम लोग ये लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं, बट इट वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बेसिकली। जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे वर वीकली रिपेल्ड, वैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस दे आर वीकली अट्रैक्टेड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या था कि इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो डायपोल मोमेंट था वो कैंसल आउट हो रहा था, तो एटम के पास ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा नहीं होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में the dipole moment, the orbital magnetic moment of electrons do not cancel out, मतलब एटम के पास नेट डायपोल मोमेंट होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यू हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक में जस्ट मिनट, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में यू हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा हर एक एटम के पास, राइट। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो एक इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होता है, एक इलेक्ट्रॉन स्पीड डाउन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक डायपोल मोमेंट जनरेट होता है, इंड्यूस होता है। एंड बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट टू डायपोल मोमेंट, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, तो नाउ यू हैव टू कंसीडर ऑन दिस डायग्राम ए बी एंड सी। सो व्हाट हैपेंस इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ऐसा है कि इफ यू सी फिगर ए, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, लेकिन दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। क्योंकि जब मैं बल्क सब्सटेंस लेता हूं उसमें एक एटम तो है नहीं, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, और हर एक एटम के पास एक नेट डायपोल मोमेंट है विच इज रैंडमली ओरिएंटेड, राइट। रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से क्या होता है दैट द नेट डायपोल मोमेंट of the material is zero because it's cancellation। फिर जब हम लोग इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एज शोन फिगर बी, उस केस में few of the magnetic moments of atom they align themselves in the direction of magnetic field। तो ये जो टाइनी मैग्नेट्स है, एटॉमिक मैग्नेट्स, क्योंकि हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट है, इसलिए हम उसको टाइनी मैग्नेट्स या फिर एटॉमिक मैग्नेट बोलते हैं। तो दिस एटम्स आर लाइक मैग्नेट्स। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, सम ऑफ दिस टाइनी मैग्नेट्स दे अलाइन देमसेल्व्स, मतलब इनका जो डायपोल मोमेंट है वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। फ्यू ऑफ देम, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक था इसलिए। अगर हमने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो all the atoms of that bulk material, the magnetic moments get aligned in the direction of magnetic field, right? Okay, so इतना हम लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे वन बाय वन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। क्योंकि जैसे डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी देखे थे वैसे पैरामैग्नेटिज्म के भी प्रॉपर्टी है, सो विल सी वन बाय वन। सो substances which are weakly repelled, weakly attracted, sorry, substances which are weakly attracted by a magnet
are called as paramagnetic substances, are called as paramagnetic substances. Okay, then in paramagnetic substances, the magnetic dipole moments of all the electrons of all the electrons do not cancel out, resulting in some dipole moment for an atom so that each atom of paramagnetic substance is equivalent to a tiny magnetic dipole, is equivalent to tiny magnetic dipole. तो ओवरऑल हर एक एटम के पास रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है, सो टाइनी मैग्नेटिक डाइपोल है, so it acts as a tiny magnetic dipole, and you can call them as atomic magnets. So paramagnetic substances will be substances which have even odd number of electrons. Okay, so now in the absence of external magnetic field, this magnetic moments of all the atoms are randomly oriented, hence the net dipole moment of the bulk material of the substance is zero. In absence of external magnetic field, the dipole moments of the atoms are randomly oriented and hence the net dipole moment of the substance is zero. The substance is zero. So you can see figure A for this. Then अगर हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, द टेंड टू अलाइन, है ना. तो in presence of a weak magnetic field, paramagnetic substance
or atoms, they basically some of them align, है ना? So when a paramagnetic substance is kept in an external magnetic field, when a paramagnetic substance is kept in an external magnetic field, हम अब इसको दो केसेस में ही लिख लेते हैं क्योंकि हमने वीक और स्ट्रॉन्ग का मेंशन किया है, तो लिख देते हैं, डजंट मैटर रियली। अगर आप वीक का नहीं भी लिखोगे तो चलता है, बट इट्स ओके बिकॉज वी आर मेंशनिंग इट। So when a paramagnetic substance is kept in an external magnetic field, then there are following two possibilities, following two cases बोल देंगे, following two cases। पहला, let's say weak magnetic field, weak magnetic field, of course ये external है, external weak magnetic field है। In this case external magnetic field is weak, external magnetic field is weak, some of the या फिर few magnetic dipole moments align in the direction of the field, few magnetic moments, या फिर few tiny magnets align themselves in the direction of the field, in the direction of external field। Okay, so in the second case strong magnetic field, so in this case मैं क्या करूँगा, I am little lazy, तो copy it, paste it, right? In this case external magnetic field is strong, and all magnetic moments align themselves in the direction of external field, and all magnetic moments align themselves in the direction of external field। तो ऐसा होता है इस केस में। ओके, राइट, तो यू शुड नो दिस। अब दोनों ही केस में, in both cases the substance shows temporary magnetism in the presence of external field। In both cases the substance shows temporary magnetism या temporary magnetization भी बोल सकते हो, magnetization। As soon as external field is removed, as soon as external field is removed,
The atomic magnets get randomly oriented and the substance loses its magnetism, and the substance loses its magnetism. राइट अभी क्योंकि सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही मैग्नेटिक है, तो ऐसे सब्सटेंस परमानेंट मैग्नेटिक बनाने के काम में नहीं आ सकते, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है तो सब्सटेंस शुड बी लाइक, अगर हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है या नहीं रखा है, इट शुड ऑलवेज शो magnetism. So in this case, since as soon as you turn off external magnetic field, जैसे ही आपने external magnetic field remove कर दी, तो substance will lose its magnetism. तो इसलिए ऐसे substances को हम लोग permanent magnet बनाने के काम में नहीं ला सकते. तो we will write this in the form of properties. So next thing is that we need to see what are properties of paramagnets. इंटरेस्टिंग है बहुत और इजी है, but it is purely theory. So properties of paramagnetic substances. तो इसके प्रॉपर्टीज और डायमैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज मोर और लेस सेम है. कैसे आपको याद होगा, वहां पे हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है, उस एक्सटर्नल फील्ड में अगर हमने एक रॉड को सस्पेंड कर दिया, तो rod will become perpendicular to the external magnetic field, right? यहाँ पे ऐसा नहीं होता. यहाँ पे अगर हमने एक रॉड को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बने हुए रॉड को एक्सटर्नल फील्ड में सस्पेंड किया, तो इट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. Okay, so if a thin rod of a paramagnetic material is freely suspended in uniform magnetic field, it comes to rest with its length parallel to the direction of the field. ये है पहला प्रॉपर्टी. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, if a thin rod of a paramagnetic material is freely suspended in a uniform magnetic field, it comes to rest with its length parallel to the direction of the field. We don't need this, parallel to the direction of the field. तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी,
मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग ऐसे मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैं डायमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ। व्हेन यू कीप डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्या था उस केस में कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर एक पॉइंट पे सेम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो इफ यू रिमेंबर, diametic substances are weakly repelled, मतलब diametic substances will move from stronger region of magnetic field to the weaker region। तो diametic substance जो होगा वो strong से weak region की तरफ जाएगा। इस केस में उल्टा है, since paramagnetic substances are weakly attracted, so they will move from weaker regions of magnetic field to the stronger regions। okay, so easy case है। These materials when placed in an external non-uniform magnetic field tend to move from the weaker part to the stronger part of the field. These materials when placed in an external non-uniform magnetic field tend to move from the weaker part to the stronger part of the field, Third property, जैसे डायमैग्नेटिज्म था, अगर आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो उस केस में तो हर एक एटम ही अपना मैग्नेटिक मोमेंट लूज कर देता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायपोल मोमेंट्स ऑफ एटम इज स्टिल देयर बट दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, राइट। मतलब in the absence of extramagnetic field, the dipole moments of the atoms are randomly oriented and hence the net dipole moment of paramagnetic substance becomes zero. So in the absence of external magnetic field, the dipole moments, just a minute, the dipole moments of the atoms are randomly oriented and hence the net dipole moment of the paramagnetic substance becomes zero, right। then जैसे मैंने बोला
in the presence of external field, the magnetic moments that tend to align the direction of field. जैसे ही magnetic field हटा दिया, because they get randomly oriented, right? इसका मतलब they lose their magnetism and hence they cannot be used to make permanent magnets. So I'll write it in short. These substances lose their magnetism when the external field is removed. वो लिखा है already but ठीक है. As soon as the external field is removed, the external field is removed, the atomic magnets या फिर the substance सीधा सीधा the substance loses its magnetism, loses its magnetism, and hence such substances cannot be used for making of permanent magnets, right? Since paramagnetic materials, since paramagnetic materials lose their magnetism on removal of external field, they cannot be used to make permanent magnets, फिर आपको याद होगा मैंने कल एक चीज बताई थी आपको दैट अगर हमारे पास एक डायमेटिक सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में है और अगर हमने उसको एक यूट्यूब में रखा है, राइट? तो यू हैव अ लिक्विड हियर ऑफ डायमेटिक सब्सटेंस. मैं कल मतलब लास्ट सेशन की बात कर रहा हूँ. We will compare it with paramagnetic liquid. So, and if you apply external magnetic field only along the one arm, तो उसमें क्या हो रहा था डायमेटिक सब्सटेंस में, डायमेटिक लिक्विड में इसका लेवल फॉल होगा, है ना? द लेवल इन दैट आर्म वेयर एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड फॉल्स. ओके, सो इट फॉल्स, बट यहाँ पे लेवल राइज होता है. सॉरी. So if a magnetic field is applied to paramagnetic liquid in one arm of U-tube, the liquid level rises in that arm. If if a magnetic field is applied to paramagnetic liquid in one arm of U-tube, the liquid level rises. The liquid level rises in that arm. नेक्स्ट, आपको याद होगा मैंने बताया था
अगर हम लोग एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ गैस अगर मैग्नेटिक पोल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था अगर एक गैस इंट्रोड्यूस किया तो दिस गैस विल अलाइन इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये जो गैस था ये ऐसा अलाइन हो जाएगा इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बट इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये जो गैस है पैरामैग्नेटिक गैस है, it will align itself in the direction of field, so it will become like a beam from north to south. So if a paramagnetic gas is introduced between the pole pieces of a magnet, pole pieces of a magnet, it spreads in the direction of field. It spreads in the direction of field. Then next, sorry for okay, it spreads in the direction of field. Next point regarding susceptibility. जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव एंड स्मॉल होता है। द ससेप्टिबिलिटी of paramagnetic substances, the susceptibility is small, is positive but small, is positive but small. Then the susceptibility decreases with rise in temperature, or the susceptibility is inversely proportional to temperature. For paramagnetic substances, susceptibility chi is inversely proportional to absolute temperature. Absolute temperature मतलब temperature measured in Kelvin to absolute temperature, capital T. Therefore, chi is inversely proportional to 1 by T. Last, जैसे आपने देखा water, hydrogen, gas, sodium chloride, these are examples of diamagnetic substances. वैसे ही aluminium, manganese, cobalt, chromium, platinum, copper, oxygen, copper, sodium, lithium, etc., etc. These are examples of are the examples of paramagnetic substances. Right, good enough. तो ये हो गया पैरामैग्नेटिज्म के बारे में. Not all, there's a small topic which is remaining paramagnetic substances के बारे में. That is called as Curie's law of paramagnetism. ये बुक में अलग से ऐसा नहीं दिया है, इन्होंने उसी के अंदर कंबाइन कर दिया है. But I will be giving separate topic, separate heading. Curie's law of paramagnetism.
बहुत सिंपल है. So there was a scientist, Marie Curie, discovered experimentally. क्या है बेसिकली, अगर मेरे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है. मैग्नेटाइजेशन मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है. तो व्हाट पेरी क्यूरी डिस्कवर्ड वाज दैट मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. तो मतलब ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ही है. द मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड. जितना ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होगा उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा, वो तो पता ही है हमको. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. मतलब मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सम कांस्टेंट इनटू बी एक्सटर्नल फील्ड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि दोनों को मैंने मर्ज कर दिया. राइट, वेयर C is called as Curie's constant. So that is it. इतना ही है Curie's law of paramagnetism. So we'll just quickly write about Curie's law of paramagnetism and then we will end today's session. So ferromagneticism will go for the next session. So what it says in 1895, Marie Curie discovered experimentally that the magnetization of a paramagnetic sample of a paramagnetic sample is directly proportional to the external magnetic field and inversely proportional to the absolute temperature. Absolute temperature means capital T in Kelvin. Right? Therefore, magnetization Mz, or simply M, is proportional to B external and magnetization M proportional to 1 by T. Therefore, we can write magnetization Mz is proportional to B external upon T. Therefore, magnetization Mz is equal to some constant C into B external by T. Right? So here equation 1 is called as Curie's law and C is called as Curie constant. Equation 1 is called as Curie's law and constant C is called as Curie constant. Right. So that's it. That's sufficient. Ferromagnetism हम लोग कल start कर देंगे. Right. So we have covered a lot of theoretical parts so far. थोड़े 3-4 टॉपिक बाकी है इस चैप्टर में, so we are expecting it to end within few 6 to 7 more lectures.